Jai Hind to all. Myself Dr. Nilesh Kumar Gupta. I am working as a professor in EC department at Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. So, today I will start information theory and coding subject. Its AKTU code is KEC 075. And now I will start from the basic, the introduction to information theory. What is the meaning of information theory? How it is related in communication system, and what is the importance of information theory? Because in communication, what you are communicating? You are communicating information from transmitter to receiver. So, that information and that the information theory, how it is important and how it is important and it is related in communication system, that I will tell you. Basically, I will start from digital communication basic block diagram, because you are communicating information from transmitter to receiver, from one end to another end. What you are communicating? You are communicating information. So, how you decide this information? What is the information theory? That concept, that basic, that originality, that origin, I will tell you in this lecture. Okay. How these are important, how it is related in communication system, and after that what are the some elements and blocks will be available, that will I will tell you. Okay. At first we come on digital communication system. This is the brief block diagram of digital communication system, in which you find some source from the sender side, then source encoder, channel encoder, modulator, then our transmitting antenna through which our transmission that we want to achieve here, then it is through the channel it will go, then from the channel it will go to the receiver antenna, receiving antenna, then if modulation is a transmitter side, then demodulation will be a receiver side, then channel decoder, then source decoder, then destination. So, in this block diagram of digital communication system, here each block plays important role in digital communication system. सबका अपना अपना फंक्शन है, सबकी अपने अपनी इम्पोर्टेंस है और सबका अपना अपना काम है, वो करेंगे तभी हम प्रॉपर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को अचीव कर पाएंगे. सो इस डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप इन प्रीवियसली वेन एवर यू स्टडीड डिजिटल कम्युनिकेशन, देन you see this block diagram consisting of source encoder, channel encoder, source decoder and channel. क्योंकि अभी तक हम क्या जानते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन मीन्स वी आर गिविंग सम इंफॉर्मेशन, देन इट विल कोड, देन इट विल गो टू मॉड्यूलेटर, देन ट्रांसमीटर transmit the information through the channel, then the reverse at the receiver side the reverse process will be there. But the next in terms of information, source encoder, source decoder, channel encoder, channel decoder, these 4 blocks are very important for at the transmitter side and at the receiver side. So, initially whenever we send some information from sender side to the source, okay, so source क्या करेगा, उस information जो भी information हमारी होगी, either it is in analog form or in digital form. Okay. So, this source it accept the information and it will go to the source encoder. Source encoder means what? कि source से आई हुई information को वो आगे encode करेगा. Okay. बट अब ये क्या मतलब है, सोर्स एनकोड करेगा. इन डिजिटल कम्युनिकेशन वी नो डिजिटल मीन्स एनकोडिंग इज देयर, सम कोडिंग इज देयर, नॉट डायरेक्टली यू आर ट्रांसमिटिंग योर इंफॉर्मेशन. सो इफ कोडिंग इज देयर देन नो बडी कैन अंडरस्टैंड, सो इट मेंटेन्स द सीक्रेसी एंड प्राइवेसी आल्सो. तो दिस इज द वेरी बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, बिकॉज एनालॉग कम्युनिकेशन में भी हम ये कर रहे थे, बट एनालॉग कम्युनिकेशन में किसी तरह की सिक्योरिटी,
कोडिंग नहीं होती थी, जो कहाँ पॉसिबल है, डिजिटल। तो सोर्स एनकोडर हमारे सोर्स की इंफॉर्मेशन को एनकोड तो कर ही रहा है, साथ साथ डेटा को कंप्रेस भी कर रहा है। क्यों? बिकॉज इफ वी वांट टू अचीव डिजिटल कम्युनिकेशन, देन we have to transmit our information digitally in terms of 101010. We know if we convert our information into 1010 form or in binary form, then this data is very high. अब इतने सारे डेटा को ऑक्यूपाई करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई वी हैव टू कंप्रेस अवर दिस डिजिटल डेटा। दैट्स वाई सोर्स एनकोडर एनकोड द सोर्स इंफॉर्मेशन एज वेल एज डेटा कंप्रेशन। तो सम टाइप ऑफ डेटा कंप्रेशन भी करके डिजिटल इंफॉर्मेशन ही एनकोड करेगा, बट साथ अलॉन्ग विथ डेटा कंप्रेशन। सो सोर्स एनकोडर एनकोड द इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विथ डेटा कंप्रेशन, then it will go further to the channel encoder. चैनल एनकोडर मतलब अब हम चैनल पे आ गए। सोर्स एनकोडर ने सोर्स इंफॉर्मेशन को, हमारी इंफॉर्मेशन को एनकोड कर दिया। नाउ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ बाइनरी फॉर्म, ओके। नाउ चैनल एनकोडर, तो नाउ एट द चैनल साइड our information in terms of 101010 like this, okay, dash dash dash. We know very well in digital communication, if 0 is transmitting instead of 1 and vice versa, then our whole information will be corrupt, will be wrong. तो 1 की जगह 0 आ गया, 0 की जगह 1 आ गया, बड़ी दिक्कत वाला काम है, इसको भी सॉल्व करना जरूर। तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये सॉल्व होगा एट द चैनल एनकोडर साइड और चैनल डिकोडर साइड। तो अब जो डिजिटल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वी आर गेटिंग सम डिजिटल इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन वी हैव टू चेक है किसके थ्रू? चैनल एनकोड। अब चैनल एनकोड का काम क्या है कि जो डिजिटल इंफॉर्मेशन आ रही है उस इंफॉर्मेशन को वो चेक करेगा कि उन डेटा में, डिजिटल डेटा में कहीं कोई एरर तो नहीं है, और वी कैन सी some type of coding we can use here, okay, error controlling code। चैनल एनकोडर पर पास क्या होगा? एरर कंट्रोलिंग कोड, जहाँ पे हम एरर को, जो डेटा आ रहा है उस डेटा में एरर को हम पहले तो हम एरर को डिटेक्ट करेंगे, यू कैन डिटेक्ट द एरर एंड आफ्टर डिटेक्टिंग द एरर यू कैन करेक्ट द एरर। सो दिस इज पॉसिबल एट द चैनल एनकोडर साइड। नाउ आवर फाइनल इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ डिजिटल, after the error controlling, it will go to our simple modulator. As per our need, we can use the modulator, okay. In digital communication, actually like we are using ASK, FSK or PSK. Now it will go to our transmitter antenna. Through the transmitter antenna, our information will go and through the channel. So this is our channel through which our information will transmit. Now our information will receive by the receiving antenna here. After that, like here we do the modulation. Similarly, at the receiver side we are using the demodulation or detection. Now it will go to channel decoder. जिस channel encoder ने हमारी चीज़ को, हमारे डेटा को, हमारी इंफॉर्मेशन को करेक्ट किया था, चेक किया था, कंट्रोल किया था। Similarly, channel decoder performs the reverse operation here. Then source decoder here, through the source encoder, what we do? What we did? We did the encoding of the source information along with data compression. Similarly, at the source decoder side, it decodes our information along with data uncompressed. फिर से डेटा को वो uncompress कर देगा, ठीक है। क्यों ऐसा हमने किया? बिकॉज our digital information is so big। तो इतनी बिग इंफॉर्मेशन, ह्यूज इंफॉर्मेशन को ऑक्यूपाई करना, accumulate करना, it is so difficult for us. That's why sometime generally we compress our data also through the source encode. Similarly, source decoder here decode our information along with data uncompression and it will go to destination and finally it will go to the receiver. So, in this block diagram of digital communication system, source encoder, channel encoder, source decoder, channel decoder,
these 4 blocks also plays a very important role. This is the very important, these are the very basic and important elements in digital communication system. I hope it will be clear to everybody. Now, अब हमने अभी पढ़ा था क्या, सोर्स एनकोडर देखा था अभी, सोर्स एनकोडर एंड सोर्स डिकोडर. ठीक, सोर्स एनकोडर वी आर यूजिंग एट द ट्रांसमीटर साइड, दिस वी आर यूजिंग एट द रिसीवर साइड. ओके, सो on from the source the information that we want to communicate from transmitter to receiver. So, this source is of analog type, analog source. If you want to communicate analog information, discrete source if you want to discrete information, okay, digital source. So, that depends upon us what type of information we want to communicate here, analog, discrete, digital. If it is clear to us, because we are using here digital communication, so we want to transmit or we are transmitting here digital information. So, source encoder and source decoder will be there. Source encoder क्या करेगा? It encodes our source information, अपनी सोर्स इंफॉर्मेशन को एनकोड करेगा और आगे भेजेगा, ये करेगा. ठीक, along with some data compression. Why? Because हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, so we have to compress our data also here. Similarly, सोर्स डिकोडर क्या करेगा? इसका रिवर्स करेगा, it decodes the our information and finally we will get the same information. Because जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वही इंफॉर्मेशन, वही मैसेज आपको भी सुनाई देना चाहिए. बीच का जो चैनल है, बीच की जो ब्लॉक्स हैं, वो अपना अपना काम कर रहा है, बट यही इंफॉर्मेशन, मेरी वही आवाज़ आपको सुनाई देगी. सो हमें सोर्स पे और डेस्टिनेशन में सब चीज़ का चाहिए सेम चाहिए, ऐसा नहीं अलग चाहिए. देखो दिस कि जो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ से भेजी थी सोर्स से, वही मुझे कहाँ चाहिए, डेस्टिनेशन पे चाहिए. ये जो बीच के ब्लॉक है, इनका काम क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन या हमारी वॉइस, हमारे मैसेज को इस एंड से लेके, मान लो ए एंड से लेके बी एंड तक पहुंचाना. सो इन कम्युनिकेशन वी आर ट्रांसमिटिंग अवर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ओके, प्रॉपरली, विदाउट एनी नॉइस, ओके, थ्रू द रिलायबल ट्रांसमिशन. दैट्स अवर मोटिव. सो दीज आर द सम कंटेंट्स, ओके, regarding the source encoder and source decoder, okay, initially. Now, what we did in the block diagram? So, in this block diagram, what information theory tries to analyze communication between transmitter and receiver through an unreliable chain. हमें क्यों करना पड़ रहा है ये? हम चाहते क्या हैं? We want to communicate, we want to share our information from transmitter to receiver through reliable channel. But ऐसा हो नहीं पाता है, क्यों? देखते हैं अपन. In this process, analysis of information sources, especially the amount of information produced by a given source, कैसा भी हो सकता है, state the condition for performing reliable transmission through the unreliable channel. तो हमें रिलायबल ट्रांसमिशन कराना है, चाहे चैनल में कितनी भी गड़बड़ियाँ हों. इसीलिए हम क्या करते हैं, जितने भी फंक्शंस हैं हमारे कम्युनिकेशन में, डिजिटल कम्युनिकेशन, उन सब फंक्शंस के टास्क को, उनके एप्लीकेशन को, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रॉपर करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो दैट्स आवर मेन मोटिव. सिमिलरली हियर इफ वी सी द channel encoder and channel decoder, this we can use in at transmitter side, this we can use at the receiver side. Similarly, source information से source information निकली, source encodes our information. Now channel encoder, now our information in binary form, okay, 1 0 0 1 0 dash dash.
So, this is in terms of 1 0. We know if here instead of 0 1 is coming. So, our whole data is correct, whole information gone. Okay. So, error will be there. So, that is why at channel encoder side we use what? Some error controlling codes. हम कुछ error controlling codes का यूज़ करेंगे. ये सोर्स एनकोडिंग करने के लिए, डेटा कंप्रेशन करने के लिए, एनकोड कर लिए प्रॉपरली, उनकी लेंथ बराबर हो, उसके लिए हम कुछ सोर्स कोडिंग यूज़ करते हैं, कुछ सोर्स कोडिंग टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं. सिमिलरली एट द चैनल एनकोडर, टू अवॉइडिंग द एरर इन द डेटा वी यूज सम एरर कंट्रोलिंग कोड्स. सो एरर कंट्रोलिंग कोड्स में दो चीज़ें आती हैं. फर्स्ट इज आवर एरर डिटेक्शन, and after error detection we can correct the error, that is error correction. Okay. So, error detection and error correction. So, if we do these one, then we can avoid or minimize our channel error present in the system. So, channel encoding also we can achieve properly using the error controlling codes. In error controlling task, we can detect and correct the errors. Okay. Then digital modulation. So, some type of modulation, because we know in each communication we use modulation at the transmitter side and demodulation at the receiver side. So, digital modulation we can do at the transmitter side, okay, using either ASK, FSK or PSK. In PSK, BPSK, QPSK, okay, and different other methods we can use as per our requirement. Similarly, digital demodulation, if modulation is there at the transmitter, so obviously we need digital demodulation at the receiver side. Okay. So, this is about the digital communication system, and it is clear from the block diagram. So, these are the functions, these are the blocks, different blocks that we can use in digital communication system, and I am explaining here what the function of each block available in digital communication system. I hope it will be clear to everybody. Now, so information theory and coding. So, what is the course objective of this subject? This you should clear, you should understand. Okay. Then it will be interesting subject for all of you. जब ये समझेंगे हम कि इस कोर्स में हम क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं. दिस इज द वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कोर्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं. ठीक. सो जैसे पहले बोलूँ मैं, है ना, यूनिट in the course in this subject there are 5 units. So, some objective and some aim and purpose of these subjects are there. So, I am calling here course objective. So, first thing is that we can say here to understand the each block involved in digital communication system truly with applications. तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, सबसे पहले कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. So, different blocks are there, source encoder, source decoder, channel encoder, channel decoder at the transmitter and at the receiver side. I explained you. So, each block, the function of each block, that will be clear in your mind. Then you can understand. See, इनकी भी importance है. ठीक, okay. So, then after that, if you understand about the each block function in digital communication system, then you can understand about the information, what is the meaning of information. Then our basics of entropy in communication system. Then to apply the knowledge of basic concept of probability and entropy. Entropy is मतलब क्या होता है, uncertainty. Uncertainty means it will related with some type of possibilities. Possibility means probabilities. तो वही लिखा, टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपीज, बिकॉज एंट्रोपी आर रिलेटेड और इंफॉर्मेशन एंट्रोपी,
these are related with possibilities, and possibilities mathematically we can represent in terms of probabilities to analyze the behavior of a communication system. Next, we can understand, I will teach you, I will explain you to analyze the use of source coding, कि what is the meaning of source coding, because source coding में हम क्या कर रहे हैं, information जो source के form में आ रही है, that information we are encoding here with some data compression, with some optimization. So, some source coding techniques also are there through which you can encode your source, okay? वो भी हम देखेंगे, and evaluating all the techniques of source encoding, सभी को evaluate करना, analyze करना, that we will see here. Now, to learn asymptotic equipartition property and its consequences, okay? तो AEP इसका देखेंगे. Then after that we learn about the channel capacity, okay? तो जिस चैनल में हम कम्युनिकेशन करा रहे हैं, that for that channel we can see, okay, we can observe the channel capacity, the ability of the channel for proper communication from transmitter to receiver. Next we will see to examine the significance of channel coding. जैसे मैंने आपको बताया सोर्स एनकोडिंग होती है, वैसे चैनल एनकोडिंग होगा ना, चैनल एनकोडिंग टेक्निक्स होंगी हमारी, तो उन टेक्निक्स के बारे में कि बाय द सम टेक्निक, बाय द सम कोर्स यू कैन डिटेक्ट द एरर, and after detecting the you can correct the error, okay? So, that we will see, okay? So, to examine the significance of channel coding and evaluating all the variable techniques of channel coding and decoding with challenges. Then to examine various error control coding techniques, वही मैंने बताया कि different error control coding technique, error control coding में दोनों चीज़ें आती हैं. By the some controlling techniques, coding techniques, you can detect the error, and by the some, by another methods you can correct the, but at first detection then correction. So, after detection correction is easy, okay? So, by the some error control coding techniques you can detect and correct the errors, okay? That we will see here. Now, we come on introduction to information theory. So, अभी मैंने आपको क्या बताया, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का पूरा डायग्राम कि what are the blocks, what are the functions of each block in digital communication system. Next, I will come introduction to information theory. Information theory का क्या introduction होगा. The purpose of communication system is to carry information bearing baseband signal from one place to another place over a communication channel. तो communication system का मतलब ही है, you have to communicate, you have to share, you have to transfer your information from one end to another end, okay. Information theory is what? It is concerned with the fundamental limits of communication. Information theory is a branch of probability theory which may be applied to study of communication system. तो information theory है क्या? It is a branch of probability theory which may be applied to the study of communication system. So, information is always related with probability, that you have to keep in your mind कि information theory क्या है, ये हमेशा probability theory से concerned, okay. Always you have to keep in your mind. Now, information theory. So, what we are talking here, information theory. Information theory क्या है? It is the branch of probability theory, okay. And information theory is also related with another fields also. So, it is related with other fields like computer science, mechanical engineering, our applied science and so many fields. So, it is related with physics also, it is related with communication also, it is related with probability, statistics, economics, mathematics, computer science and so on. So, information theory is also related with another fields, ऐसा नहीं कि communication से related,
because it relates with probability. It is a branch of probability theory. So, it is related with another fields also, okay, that you have to keep in your mind. Next हम देखें information. Information होती क्या है? This is very very important for us to understand. Okay, information का meaning है क्या? If someone says it may rain tomorrow, it will come or it will convey, you can say, some information. Or in short we can understand information, it depends upon the probability. मैंने आपको क्या बताया? Information theory related with probability theory. Okay. So, it relates with probability, not its content, that you have to keep in your mind. Okay. So, in this way we can understand about the information. So, in the next lecture I will tell you about the information, what is the meaning of information, how you understand about the information, information है क्या, and after the information how we calculate the entropy of the system, that we will see. These are the some books or references, my references that I have taken for preparing this presentation. Okay. So, this you can use. Okay. Now, if you have any query, then you can ask me. Okay. Thank you very much.